Good morning, students. Standard 6. Today we are going to SST chapter 1, that is by name Introduction of History. Okay? Introduction of History. So, first we should know what is history. Do you mean by history? Okay? Before that, you remember about your family. Just as your family family album records past events in the family. जब देखते हो उसमें क्या दिखाई मिलता है? पास्ट जो हो गया है, बहुत सारा कुछ इवेंट्स हो गया है, शादी घर बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब का जो फोटोग्राफ रिकॉर्ड करके रखे हो वो हमारा फैमिली का हिस्ट्री है. सो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स व्हाट? द पास्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. हमारे अर्थ जो है इसका जो बीत गया है, पास्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, हमको कैसे मालूम होगा हम लोग को? रिकॉर्ड से. सो हिस्ट्री आंसर्स क्वेश्चंस व्हाट, लाइक हाउ डिड मैन लिव इन अर्ली टाइम्स, पहले कैसे वो रहता था. व्हाई डिड वार्स टेक प्लेस, युद्ध कैसे होता था. युद्ध तुमको मालूम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी गॉन, और अभी भी कुछ भी चल रहा है. वार जो है सारा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जगह में कभी कभी भी थोड़ा बहुत चलता रहता है. सो द आंसर टू सच क्वेश्चंस, are found in the remains and records left behind by our ancestors. History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available materials, remains and records. जो कुछ छोड़ के गए हैं उसका और जो रिकॉर्ड, इसमें हम लोग को पता चलता है कि कौन सा हिस्ट्री में ये इवेंट्स जो है होके आया है अभी तक. तुम लोग को हम बोलेंगे कलिंग वार 261 BC में हुआ था. हमको कैसे मालूम हुआ? रिकॉर्ड पढ़े, उसमें देखे, अभी भी उस टाइम में यूज हुआ कुछ वेपन्स जो है उन लोग रखे हैं हम लोग, उसको भी हम लोग देख के पता चलता है कि कलिंग वार कब हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940, 4 साल खत्म हुआ, 4 साल के बाद 1918 में. ये हिस्ट्री है और उसका रिकॉर्ड है, इसके लिए हम लोग को पता चलता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में हुआ था एंड 45 में वो कंप्लीट हुआ. उसका बीच में जापान में नागासाकी एंड हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा हुआ था, जिसका रिएक्शन जो है अभी भी हो रहा है. बच्चे जन्म होते हैं, एक बच्चा जन्म होता है, उसका 2 सिर जो हेड रहता है, 4 पैर रह जाता है, कुछ कुछ भी होता है जो भी. ये जो घटना, जो इवेंट्स, ये सब हम लोग को पता कैसे चलता है ना, हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड्स है वो सबसे पता चलता है. So, a person who carries out such studies and records, the finding is called a history. उसको हिस्टोरियन बोला जाता है, ऐतिहासिक. उन लोग उस टाइम ये सब कलेक्शन करके रिकॉर्ड किए हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं, तब हम लोग को पता चलता है. ऑल एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है इसमें हम लोग को पता चलता है. ओके. So now come to the main point. When of past event. Already you have understood what is history. Then you come to the point, when of past events. Past event कब हुआ था? The historian arranges past events in order of time. That is, events that happened first followed by events that happened later. So this order is called chronology. Okay, chronology याद रखना, बुक में है फिर भी उसको याद रखना. So now in history, हमारे इतिहास में क्या है?
you will find dates with BC or AD. BC or AD. BC मतलब before Christ and AD मतलब Anno Domini. Since it is more natural to say in the year of Lord 180, AD is usually written before the number. For example, we write AD 180, which means 180 years after the birth of Christ. Christ जो है उनका बाप जन्म होने का बाद ये हुआ था, which means 180 years after the birth of Christ. When talking the recent times, we usually do not put AD before the year. So, for example, when we write India became independent in 1947. So here it is clear that we means AD 1947. The dates for BC go backward. Thus 232 BC will come after 185 BC. To calculate the number of years between a date in BC and in AD, the two should be added together. जैसे 250 BC to AD 150. How many years? This is how many? दोनों को ऐड करने से कितना आएगा? 400 years. Okay. For the convenience of study, the history of man has been divided chronologically into 3 periods. These are ancient, medieval, and modern. So, ancient period, in this book, in your book, we shall study about India during the ancient period. The ancient period in India extends from the time when man first emerged to the time when the Arabs conquered Sin in AD 712. ये याद रखने से हम लोग को इंडियन का जो एंशियंट हिस्ट्री मालूम होगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या हुआ था ना, मैन इवॉल्व फ्रॉम ए मेयर हंटर एंड फूड टुगेदर टू ए फार्मर एंड देन टू ए ट्रेडर. बिजनेस चलता था. ही वेंट ऑन एस्टैब्लिश सिटीज एंड लेटर लार्ज किंगडम्स. बड़ा बड़ा जो साम्राज्य होता था, राजा लोग शासन करते थे. सो इन द एंशियंट पीरियड इंडिया केम इनटू कांटेक्ट विथ मैनी फॉरेन कंट्रीज एंड द इंडियन पीपल were influenced by foreign customs, foreign religions and literature and also arts. Okay. Prehistory and history. What? At the beginning of the ancient period, on that period, man did not live a settled life but wandered from place to place. एक जगह से दूसरा जगह, इतना ही करते थे. और जो पहले पढ़े हम लोग, खाना कुछ करते थे, खेती बाड़ी इतना ये नहीं हुआ था, धीरे धीरे वो हुआ. So he did not know how to read and write also. उसको मालूम नहीं था. क्यों? उस टाइम ये सब इम्प्रूव नहीं हुआ था. इंडियन पीपल धीरे धीरे कांटेक्ट में आए. हमारे देश में भी बाहर का जो फॉरेन कंट्री सब आए, आके धीरे 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 हम लोग सीखे व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज एजुकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में होके बहुत कुछ सीखे हैं. मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ हमको जानकारी होता है. याद रखना. हाँ. सो द पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री से पहले कुछ भी नहीं था, रिकॉर्ड उकॉर्ड कुछ नहीं था. तो हम लोग कैसे करेंगे? याद करके, देख के, पूछताछ करके आदमी लोग इसको रिकॉर्ड बनाए, फिर बाद में उसको जब पढ़े हम लोग उसको प्री हिस्ट्री बोले. ओके.
Historians draw conclusions about this period by studying such durable remains as bones, tools, weapons, and cave shelters. Okay. Sometimes by observing tribal people who have retained primitive lifestyle, historians confirm their conclusions about prehistoric man. उस टाइम उनका कस्टम ये सब देख के पता चलता था कि ड्यूरिंग प्री हिस्ट्री पीरियड हम लोग का वर्ल्ड का पोजीशन क्या था, सॉरी इंडिया का पोजीशन क्या था. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स इज नॉन एज व्हाट, हिस्ट्री. अभी आए ना, अभी हिस्ट्री में पहुंचे. ये जितना हम तुमको बोले जो है इसको याद रखना, ये ऑल आर प्री हिस्ट्री, देन आया हिस्ट्री. So the written records, and that provided details such as dates of events. बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था हमको कैसे पता? अगर बुक को पढ़ेंगे, हिस्टोरियन दे हैव रिटन 1526. 1526 में किसका किसका साथ हुआ था वो भी वही हिस्ट्री में तुमको मिलेगा. बाबर विथ इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर आके बैठ गए. वहीं से हम लोग जो मीडियावेल पीरियड पढ़ते हैं उनका ये लड़का उनका लड़का करके औरंगजेब तक ये हिस्ट्री में है. और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग को ये पता चलता है कि क्या इवेंट सब हुआ था. ओके. Then next point, where of past event. ये पास्ट इवेंट जो हुआ था, घटना सब घटा था, कहाँ हुआ था, ये भी हम लोग को हिस्ट्री देता है. हिस्ट्री गिव्स अस द इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स. ओके. While describing events of the ancient period, the historian has to identify the location where they took place. This often becomes difficult because things like the course of a river, the name of a place, territorial boundaries, etc., ये सब चलता है. So change with time. You can see some of the rivers of northwestern India given in the map in your book also. Several of these rivers have changed their ancient courses and have got what new names. अभी जो है नाम, उस टाइम एक नाम था, अभी एक नाम है. जैसे कि नॉर्थ एंड वेस्टर्न, ये बीच में जो अभी बोलते हैं सिंधु रिवर, सिंध जो है रिवर, उस टाइम उनका नाम सब अलग अलग था. अभी उसका अलग अलग हुआ है. ऑल ऑफ यू हैव गॉट द नेम्स within bracket in map in the book. Okay. So the ancient Indians' idea about Indians' location was quite different from ours. They believed that the earth was flat with a golden mountain called Meru at the center. Meru was surrounded by a vast ocean which had several islands, continents, including Jambudvip. India, which was then known as Bharatvarsha. So, this was what? Supposedly situated in Jambudvip. Jambudvip आपको कहाँ मिलेगा तुम लोग को? ना इंडिया मैप का साउथ का तरफ मिलेगा. ठीक है. So it was named after a king named Bharat, and the tribe consists of his descendants, also known as Bharata. So to this day, India is known as Bharatvarsha or Bharat. The earliest Indian text refer to the region watered by the Indus, Sindhu, अभी जो बोल रहे थे हम, and its
tributaries as Sapta Sindhu. ये भी है, बुक में है, you will get. The Greeks were, sorry, the Persian, पहले Persian, the Persian Iranians called it Hepta Hindu. The Greeks were the first to use the name India. Greek, हमारा जो इंडिया नाम है कंट्री का, ये पहले कौन दिए थे? ग्रीक्स लोग दिए थे. The ancient Indian text sometimes refer to the region lying between the Himalayas and the Vindhyas and extending from the western coast to the eastern coast as Aryabhatta. Okay, so next class we will read about sources, materials on that period and literary sources material क्या क्या, religious literature. These are the points. Next class we shall discuss.